So here are the 7 quotes that changed my life. Obviously, there are so many quotes, there are so many books, and there are so many things I have read. But these are the 7 quotes that help me to understand life better, that help me to be aware more. First quote is, a year from now, you may wish you had started today. तो हम हमेशा बात करते हैं कि यार मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे वो चीज़ें करनी है, मुझे वो चीज़ें करनी है, मुझे अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है, मुझे इंस्टाग्राम पेज स्टार्ट करना है, मुझे कुछ नई चीज़ें सीखनी है. हम हमेशा ऐसी बातें करते हैं एंड वी विल कीप टॉकिंग दिस अंटिल आज हम बात करते हैं, कल भी हम वही बात करते हैं, 3 महीने के बाद भी हम वही बात करते हैं, 6 महीने के बाद भी हम वही बात करते हैं कि यार मुझे ये करना है, वो करना है. 1 साल के बाद भी हम वही बात करते हैं कि मुझे ये करना है, वो करना है. और वो 1 साल तो वैसे भी निकल जाता है, अगर आप कुछ करो या ना करो आपका टाइम तो वैसे भी चला जाएगा. सो बेटर है कि वो टाइम अगर जाना है तो कुछ करने के बाद जाओ. सो अगर मुझे खुद का एग्जांपल देना हो, लॉकडाउन में, बिफोर द लॉकडाउन आई ऑलवेज हैड दिस थॉट कि यार मुझे अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है. एंड एट दैट मोमेंट आई केम अक्रॉस दिस quote ki you have to start today rather than thinking about the 1 year. And at that moment I started my YouTube journey, and today I can say that because of that I have like around 11,000 12,000 subscribers on the YouTube. बट अगर उस टाइम पे मैंने अगर शुरू नहीं किया होता तो आज भी मैं वही बात कर रहा होता कि यार मुझे अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है लेकिन टाइम नहीं मिल रहा, सिर्फ मैं वही बातें कर रहा होता. बट एट दैट मोमेंट आई स्टार्टेड, तो टाइम तो चला गया, उसके साथ मैंने उस पर काम भी किया. दैट्स वाई आई हैव दिस यूट्यूब चैनल, दैट्स वाई व्हाट आई हैव वॉट एवर आई हैव टुडे. सेकेंड कोट इज, you live more in imagination than the reality. This always hit me hard. I remember reading this quote in some of the Stoic philosophy and उसके बाद ये बहुत ही हिट कर गया, बिकॉज हम बहुत चीज़ों के बारे में सोचते हैं, लाइक वेदर इट इज़ अ फैमिली, वेदर इट इज़ अ करियर, वेदर इट इज़ अ रिलेशनशिप, वेदर इट इज़ डिप्रेशन, वेदर इट इज़ इनसिक्योरिटीज़, और लॉट ऑफ चीज़ों के बारे में हम अपनी इमेजिनेशन में बहुत सोचते, ओवर थिंक करते, सोने से पहले ओवर थिंक करते. एंड आई यूज टू डू अ लॉट, लाइक लिटरली अ लॉट. आई यूज टू डू अ लॉट ऑफ ओवर थिंकिंग एंड आई यूज टू क्राई बिकॉज ऑफ दैट. आई हैव क्राइड मेनी मोर टाइम्स दैन यू कैन इमेजिन, but because of that. But when I came across this thought, then I got into the deep down, I go rabbit hole मैंने इसके गया, and then I realized that is true कि we suffer more in imagination than reality. Reality में उसमें से not even 10% is gonna happen. So why suffer in imagination? So whenever I get a new thought, I first try to write it down कि यार इसमें रियलिटी में इससे कुछ होने वाला है कि नहीं होने वाला है. अगर रियलिटी इससे चेंज होने वाली है देन आई गिव अ थॉट, अदरवाइज आई जस्ट दैट केम अ थॉट, उस पर मैं सिर्फ सोचता हूँ कुछ है कि नहीं, बट आई डोंट गो डीप डाउन इन टू दैट थॉट एंड आई ट्राई टू शट दैट थॉट डाउन देयर ओनली. यू हैव टू डाई अ फ्यू टाइम्स बिफोर यू कैन रियली लिव. So even Naval Ravikant says that you have only one life, but second life starts when you have, when you realize that you have only one life. So that kind of quote उसने जोय रोगन के पॉडकास्ट में बोला था. I don't remember. I will put the link in the description. The same way here, you have to die a few times if you want to understand the real life of the meaning. So I have been through one of my hard times with me. Like there are so many ups and downs in my life. I realized after graduation, after going through the depression, while changing the career, while doing a lot of stuff, I realized that you have only one life, and if you want to live it fulfilled, then you don't have to think about a lot of stuff. Just be in the moment, enjoy the life. At the same time, try to plan your future also. So that's the reason I always think that you have to die a little. Like पेन इज़ द बिगेस्ट इवोल्यूशन इन द हिस्ट्री. अगर आप पेन से एक बार जाते हो देन यू गेट टू नो द रियलिटी, यू गेट टू नो द रियलिटी ऑफ द हैप्पीनेस, यू गेट टू नो द रियलिटी ऑफ सेटिस्फैक्शन. सो वो सारी चीज़ें समझने के लिए यू हैव टू गो थ्रू द पेन, एंड द मोर यू अर्ली go through the pain, the more life becomes easy in the future. The next quote is, the happiness of your life depends upon the quality of your thoughts. So basically your thoughts are really important. When I read this quote I realized that thoughts are everything. Even I read the book, the big magic, even the power of your subconscious mind. These both books always talks about your thoughts and why your thoughts are really important. If you always think about something is bad going to happen, or if you are always thinking कि यार किसी के बारे में बुरा सोचना, किसी के बारे में बुरा करना, then your life is not going to fill with that, because you are going to compare, you are going to be insecure, you are going to do a lot of that stuff, and that is ultimately going to decide your life and your happiness. तो अगर आपको हैप्पी रहना है, ट्राई टू बी ऑप्टिमिस्टिक मोर एंड मोर रादर देन पेरिमिस्टिक. सो द मोर यू ऑप्टिमिस्टिक यू बिकम, योर थॉट्स गेट क्लियर, आपको आपके थॉट्स में क्लैरिटी पसंद आती है, एंड उसके बाद आपकी हैप्पीनेस लेवल भी बढ़ जाती है, बिकॉज यू ऑलवेज हैव द हैप्पी हार्मोन्स, यू ऑलवेज हैव द हैप्पी थॉट्स, and that ultimately decides your day-to-day life and day-to-day happiness. Finite players
play within boundaries and infinite players play with boundaries. So there is a book like Finite and Infinite Game, and this talks about like this quote talks about that finite and infinite game. So बेसिकली अगर आपको लाइफ में देखा जाए तो यूजुअली बहुत सारे लोग फाइनाइट गेम्स यानी कि विद इन द बाउंड्री हिट खेलने के लिए देखते हैं. बट इफ़ यू वांट टू बिकम समथिंग ग्रेट, इफ़ यू वांट टू डू समथिंग ग्रेट, देन यू हैव टू पे विथ बाउंड्रीज रादर देन विद इन द बाउंड्रीज. सो डिफाइन कि आपने सर्कमटेंसेस क्या क्या है, आपने कंफर्ट जोन क्या क्या है. अगर आपको अपने कंफर्ट जोन में ही कहना है देन यू विल बिकम ऑलवेज अ फाइनाइट प्लेयर. But if you want to become an infinite player, then you have to grow beyond your comfort zone. You have to do things beyond your comfort zone. Then and then only you will become the infinite player. Next quote is more about the finance side, from the finance side, and the quote is, "It's not the man who has too little, but the man who craves more that is poor." So I always talk about the expense and the income, because we always think that the more income you have, the more rich you will become, but that's not always the case. It also depends on your expense also. So the person who have too little, जिसके पास बहुत सारी कम चीज़ें हैं, जो लेस देन लिमिट में रहता है, ही इज़ नॉट गोइंग टू बी पुअर. बट द पुअर वो पर्सन है जो हमेशा क्रेव करता है मोर चीज़ें का. यार मुझे आईफोन लेना है, मुझे आईपैड लेना है, मुझे यहाँ पे जाना है, मुझे वो घूमना है, मुझे सारे नए गैजेट्स लेने हैं, मुझे सारे नए क्लोथ्स लेने हैं, मुझे ये लेना है, मुझे वो लेना है. ऐसे बहुत सारी वो शिकायतें करता है और वो लेते जाता है. देन दैट इज़ द काइंड ऑफ अ पर्सन हु इज़ पुअर, हु इज़ गेटिंग थिंग्स जस्ट टू शो ऑफ टू द पीपल, जस्ट बिकॉज किसी को तो दिखाना है कि मेरे पास कितना पैसा है. दैट इज़ द पर्सन हु इज़ पुअर. बट पर्सन हु ट्राई टू लिव बिलो देयर मीन्स that is never going to be the poor. So always think about this scenario whenever you are thinking about that. The more you crave, the more poor you will become. The last, again, that is one of my favorite quote from the Naval Ravikant book, that is the Almanac of Naval Ravikant, which is my favorite book. The quote is, "People who live far below their means enjoy the freedom that people busy upgrading their lifestyle can't fathom." So again he talks about why you should live below your below means. Let's say currently this month, let's say consider your salary is 50,000 and you can survive in 30,000 also. Tomorrow your salary becomes 1 lakh, 2 lakh, and if you try to increase your lifestyle from 30,000 to 80,000, then you are never going to become a rich. You will never have financial freedom, time freedom or anything. But you know that currently you can survive in 30,000. Even if your salary becomes 1 lakh, you should able to retain or you should able to survive in 30,000. That is something you should always work on, rather than जैसे सैलरी अपग्रेड होती है, लोग अपनी लाइफस्टाइल अपग्रेड करते हैं, बहुत सारी चीज़ें अपग्रेड करते हैं, उन्हें लगता है कि पैसा आ रहा है तो ये दैट इज़ गोइंग टू बी विथ यू ऑलवेज. बट इट्स नॉट द ऑलवेज केस. इफ यू वांट टू freedom, if you want time freedom, if you want financial freedom, then you have to live below your below means. Then and then only you will able to reach the financial freedom and the time freedom. This is something I learned very hard way. And even if even if I have many sources of income, even if I have anything that I can afford, I try to think and I try to realize whether that thing is really necessary for me or not. If not, then I'm not going to buy. So that's how these are the some of the 7-8 quotes that is one of my favorite. Obviously there are more quotes, and the more I realize, the more I will share with you guys. If you are looking for some of the books that I learned from this quote, then you should check out the book recommendation, this video or the playlist, where you will find everything about that. And that's all for the today's video. See you in the next one. Bye bye, tata, take care.